unable to take observations. Is that true? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So shall I explain the whole experiment altogether, or there are specific doubts which you need to discuss? Ma'am, the Ma'am, whole whole one. experiment. Whole experiment. Okay. So have you all studied the theory? Hmm? जवाब दो तुमने क्लास Have you all studied the theory yourself or not yet? तो Yes, ma'am, we did. Okay, chalo. Yes, ma'am. Okay. So, right. So let's begin by discussing the theory part. So as of now, you are very well aware of two special pendulum. One is simple pendulum and other is compound pendulum. This compound pendulum further comes into two categories. One is with, so we are into the category of compound pendulum. Cultural processes. It was the 20th And century. these compound pendulum can further be defined as symmetric one and asymmetric one. So here I'm talking in terms of mass, symmetricity and asymmetricity. So in one of them that you already aware, bar pendulum, the mass is symmetric distributed, it is homogeneous. Whereas the other variety which is of asymmetric pendulum, the example is Stator's pendulum, the mass is not uniform. The mass is not uniform, but you must have noticed that the mass is asymmetric. One edge of the pendulum is very heavy, whereas the other edge of the pendulum is very light. One edge comprises of steel weight and the other edge comprises of wooden weight. Have you seen the Cater's pendulum yet or no? Yes, ma'am, we have seen. So, is any of you present in college and visited the lab also? No, ma'am, I don't think so. Not yet. So that means you haven't seen the Cater's pendulum physically. So I have some of the videos and I can play for you. Give me 1 minute. Are you guys planning to visit college soon? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, after this semester. Hmm? Ma'am, after this semester. After this semester, yeah, for sure. Because you'll be having your exam soon, no? I just have to locate those videos first. Just a minute. I just wanted to show you the video I made. Here.
Chalo, I will look for it. I am unable to locate it now, but let me first explain and then I'll come to it. Okay, so in actual practice, a Cater's pendulum looks like. I can Google the image now. Ma'am, we have seen that on wiki page. Acha. But I just wanted to show you the actual image. Wiki page is fine. Acha, videos you have seen on wiki page? Yes, ma'am. Bilasni ma'am had made those videos. हाँ हाँ हाँ, those, हाँ ठीक है, मैं भी वही दिखाने वाली थी. ठीक है, तो then it's good. So yeah, that's fine. So are you able to see the screen? Yes, So ma'am. this is how your Yes, ma'am. pendulum look like. So there are two sharp edges. One is this and other is this. I can name them as edge A and edge B. So this is my edge A. This is edge B. And as I said, one end of the pendulum is heavy and the other end is lighter in order to make it asymmetric. Okay, so now what is the whole idea of doing this experiment? The whole idea is to show you that even an asymmetric distribution of mass is capable to show simple harmonic motion. Okay, we have verified it for the single concentrated mass, which is okay, single mass, which is concentrated on the bob. We have shown it for a continuous distribution of mass, which is bar pendulum. Now we want to show that even a asymmetric mass is capable to show is to oscillate as per the requirement of simple harmonic motion. Okay, so this is your heavy steel weight and this is your lighter wooden weight. Okay, these are two knife edges, K1 and K2. So these K1 and K2 are the knife edges which can be through which the pendulum can be suspended. Okay, so I can suspend it from here and I can suspend it from here. Now the length in between, in between K1 and K2 is called the equivalent length of the Cater's pendulum. Okay, equivalent to what? Equivalent to simple harmonic oscillator, because within this length only the simple harmonic motion can be executed. If I am suspending it from the knife wedge K1, K1 is called point of suspension, whereas K2 is called point of oscillation. And when I reverse this, the way I did for bar pendulum, now K2 will be my point of suspension and K1 will be point of oscillation. So this way I can show that the length between the two knife wedges is the equivalent length of a simple pendulum for this Cater's pendulum. Number two, as I can invert the pendulum, I can suspend it from K1 and K2. Condition applied that the time period of oscillation about both of them should be same. Then what is my purpose? My purpose is to find out that how much will be the time, how to make the time period same. Okay, if the time period is same, then you can find out the value of acceleration due to gravity using this asymmetric pendulum as well. Do you understand this much? Ma'am, can you please repeat the time period point? The last one. Okay, no, but I said that it is the pendulum is said to be reversible when the time period of oscillation of a particular number of oscillations about K1 should be same as the time taken for those many oscillations about K2. If the time period is same, then it would be an reversible pendulum.
You remember what we showed for bar pendulum? We had the whole side A, we had whole side B, and there were equal number of holes which were lying on the respective sides with respect to the center, Yes, right? ma'am, I So if I'm understand. and so if I'm measuring the time period corresponding to B1, that should be same as that of the time period measured across A2 or A1. The time period for B5 should be same as the time period of A5. That is why the pendulum was said to be reversible, and the equivalent length will be the distance between the point A5 to B5, or A9 to B9, or A7 to B8. Right? So the whole purpose over here, the experiment, is to make sure that the pendulum is reversible. As a result, the time period measurement about both the knife edges is same. Do you understand this much? Yes, ma'am, I Yes, got. ma'am. Very good. Yes, ma'am. Now, so yeah. Okay, so this is your simple pendulum arrangement. So now you can identify this is your sharp edge 1, sharp edge 2, some wooden weight is attached over here, and then it is the knife edge from which the pendulum is to be suspended. Similarly, this is the steel weight, and this is the point from where the knife edge from where the mass is to be suspended. This is the center of the rod. Okay, but center of the rod is not the center of gravity for the system. Can you tell me why the center of the rod will not be the center of gravity? Ma'am, because here the weights are Because not equal. Because the weights are not equal. So towards which side the center of gravity will shift? Ma'am, Heavier towards side or steel lighter side. side? Ma'am, heavier side. Heavier side. So in order to balance the lighter side, the length of the rod should be increased towards the lighter side, and as a result, the displacement of the center of gravity will be more towards the heavier side. Fine. Now Yes, the ma'am. theory part. So this I have already told you. This is weight 1, knife edge 1. This is G stands for center of gravity. W stands for center of the rod. K2 stands for the second knife edge. W2 stands for second weight. So we will measure the distance between the first knife edge and the center of gravity, and the second knife edge and the center of gravity. Okay. So you can do this. This is not very tough. This is the simple derivation. Do you want me to go through the derivation also, or should I directly come to the procedure? Ma'am, you can start the procedure. We will read this. Yeah. Yes, ma'am. Procedure. So see, this is the formula. The only thing which I am assuring from here, see, this is additive, this is the difference. Smaller the difference, smaller the difference, smaller will be the denominator, and if the denominator is smaller, then the ratio will be higher. है ना? तो अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट रेंज का होगा और जी का वैल्यू ज्यादा आएगा. तो अगर आप T1 को T2 के बराबर कर दोगे तो इस वाले पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा 0 होगा, है ना? Yes, ma'am. चलो सिमुलेटर पे आते हैं. ये हमारे पास सिमुलेटर है. अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये हमें कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर एडजस्ट करनी है. तो मैंने इन्वायरमेंट पिक कर लिया, अर्थ. मास ऑफ द स्टील इज 0.5 भी कर सकते हैं, 0.6 भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे. मान लो मैंने 0.6 कर दिया. मास ऑफ द वुडन सिलेंडर 0.05 kg है, उसको भी 0.06 kg कर दिया. यहाँ से नाइफ वेज 1 और नाइफ वेज 2 की पोजीशन को करना है, और वो कैसे होगा? अब
पे देखो ये नाइफ एज 1 और नाइफ एज 2, 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, दैट बोथ आर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द दीज एजेस। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, 15 सेंटीमीटर हो गए दोनों, 27 सेंटीमीटर हो गए, कहां से, 27 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एज। ओके, तो मैं इसको मिनिमम रखती हूँ। मिनिमम कितना है, 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। स्टील वेट एंड वुड वेट कितने डिस्टेंस पे दूरी पर है, इस एज से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, सिलेंडर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, इन दोनों सिलेंडर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो चलो अब एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो जो पूरी रॉड है उसका लेंथ कितना है, पूरी पूरी की पूरी रॉड का लेंथ है 120 सेंटीमीटर्स। ओके, और 120 सेंटीमीटर में से ये वाला जो पॉइंट होगा, इट वुड बी योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका नाइफ वेज स्टील वेट का डिस्टेंस कितना है, 31.09, और वुडन वेट का डिस्टेंस कितना है आपका 68.91। ओके, अब आप इसको ऑसिलेट कराएंगे। जब आप इसको ऑसिलेट कराएंगे तो क्या होगा, पहले आपको फर्स्ट राउंड में देखना है कि टाइम पीरियड किस पोजीशंस के अबाउट सेम आता है। ओके, तो आप इसको ले लीजिए और आप मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया नाइफ एज ए, या आपने इसको नाम दे दिया स्टील, और इसको नाम दे दिया वुड। तो जब ये स्टील से हैंग है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, स्टील, और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, वुड। तो अब आप क्या करेंगे, मैम ऑसिलेशन के लिए इसको खुद ऑसिलेट करवाना पड़ता है मैम? हाँ, इसको खुद ऑसिलेट कराना पड़ता है। ये हो गया ऑसिलेशन स्टार्ट। अब आप इसको किसी भी पॉइंट पर कर दो। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, तो 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना आया है, 40 आया है। ठीक है, अब 40 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पेंडुलम को हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि वुड वाली साइड को ऊपर ले आओ और स्टील वाली साइड को नीचे लेके जाएंगे। सो वी विल इन्वर्ट दिस। ठीक है, अब स्टील नीचे आ गया और वुड ऊपर चला गया। अब दोबारा से इसको क्या करेंगे, तो ये 40.659 मैंने नोट कर लिया। अब इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा दूर ले जाए। हाँ, अब ये स्टार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 ऑसिलेशंस का टाइम कितना है, 40.518।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। TS टाइम पीरियड अबाउट द स्टील वेट, TW time period about the wooden weight, and this is the time period for 20 oscillation. Time taken for 20 oscillations. तो TS कितना आया था, कुछ 40.659 और ये आया है 40.518। फिर मैं निकालूंगी टाइम पीरियड विच इज TS by 20 and TW. So this is time period which is TW by 20. तो करो जरा इसे 20 से डिवाइड और मुझे बताओ कितना आएगा। मैम अगर हम 0.06 एंड 2.02 2.02, ये कैसे हुआ, ये भी गलत पर लग रहा है बल्कि मुझे तो 40 डिवाइडेड बाय मैम टाइम पीरियड ऐसा आएगा 2.03295 और 40.518 का आएगा 2.0। थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, काम करते हैं। 2.03 इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक है, 3 तक भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 40.66 डिवाइडेड बाय 20 तो ये हो गया 2.0333 और ये कितना होगा 40.52 2.033 होएगा मैम, ये भी 2.033 होगा। अच्छा यस मैम, अप्रोक्स। चलो, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं डेल्टा टी, that will be TS minus TW, so this is 0, right? तो मेरा काम तो यहीं पर हो गया। मान लो ये 0 नहीं आता, ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता या कोई थोड़ा बड़ा नंबर आता तो मैं क्या करती, दोबारा से मुझे अपने पेंडुलम को एडजस्ट करना पड़ता। कैसे एडजस्ट करते पेंडुलम को, हम क्या करते, यहां पर से जाके यहाँ से इस नाइफ वेज के डिस्टेंस को बढ़ाते, कितना बढ़ाते, 1 सेंटीमीटर तक बढ़ाते। अब मुझे इसे रीसेट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप इसको यहाँ पर से जाके रीसेट करेंगे तो ये आपको दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा 0.5, 0.6। पहले आप इन्वायरमेंट चूज करेंगे अर्थ, फिर आप इसको चेंज करेंगे 0.6 कि हमने 0.6 के लिए किया था, और इसको भी आप करेंगे 0.06 और अब आप इसको नाइफ वेजेस को एडजस्ट करेंगे। 10 सेंटीमीटर से आप बढ़ा देंगे इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर, ठीक है, अब सेम प्रोसीजर you start oscillating it and start your stopwatch at any instant. So 1, 2 and so on. Again do it for 20 oscillations. Stop it. Okay, then अभी ठीक है, और फिर आप इसको क्या करो, स्टॉप करो पहले और फिर इसको रिवर्स कर दो। तो अब आप क्या करोगे, रिवर्स होगा तो फिर देखो स्टील ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। अब दोबारा से
वुड को यहाँ ले जाके छोड़ देंगे और इसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे. Start somewhere in between. So it would be 1, 2, 3, 4, 5. Do it for 20 oscillations again. So now go to this table. Whatever the time period, write that. Let's say that's 40.63 and you get 39.12. Then you write down the difference. Till when you will do this, you will make this table till the time difference exactly becomes 0. ठीक है? Once the time period becomes 0, then you will not change the position of the knife edges furthermore. मान लो आपको 10 सेंटीमीटर पे मिल गया तो 10 सेंटीमीटर फिक्स कर दोगे, 11 पे मिल गया तो 11 फिक्स कर दोगे, किसी पे भी मिल जाएगा तो आप वहीं पर उसको फिक्स कर दोगे. ठीक है? फिक्स करने के बाद आप एक और फ्रेश टेबल बनाओगे जिसमें आप लोगे time period about steel weight 100 times, 100 oscillations 3 times, and again time period about wooden weight 100 oscillations 3 times. And that is what the whole experiment is. So again you will write down, so again the table will be for 100 oscillations. मैम ये 100 ऑसिलेशंस उस टाइम पे आएंगी ना जहाँ पे हमारा डेल्टा टी 0 आ रहा है. बिल्कुल, जिस टाइम पर आपका डेल्टा टी जो होगा वो 0 होगा, उस टाइम पर आप 100 ऑसिलेशंस लोगे. ठीक है? तो आप दोबारा से 3 सेट्स, यानी कि आप पहले लिखोगे टीएस, टीडब्ल्यू, सेट 1, सेट 2, सेट 3. और क्योंकि वो सेम ही स्टील के अबाउट 100 ऑसिलेशंस के सेट है तो टाइम पीरियड हमेशा सेम आना चाहिए. मान लो आपको कुछ आता है 100, 180.37, 180.42, 180.67. ठीक है? सिमिलरली आप टीडब्ल्यू मेजर करोगे, क्योंकि आप पहले ही कैपिटल टी को 0 दिखा चुके हो तो आपके पास टीएस और टीडब्ल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो होना नहीं चाहिए, तो ये ऐसे वेरी कर सकता है 179.99, 180.42 and whatever 180.3. then दोबारा कैपिटल टीएस, दोबारा कैपिटल टीडब्ल्यू, and then your delta t, which should be 0 in principle. Once you have calculated this, you will then find out how much is your just a minute. Okay, so then you will find out all the measurements. You will find out the measurements like show measurements. So you will find out how much is your H1, how much is your H2, that is the distance of center of gravity from the respective weights, and you will fill up everything here in the formula. Put everything in the formula here. What is your T1? Yani weight of time period about steel weight, time period about wooden weight, distance of the steel from the center of gravity, distance from the then the distance of the wooden weight from the center of gravity, and that's it. And from here you should get the exact value, not exact but then still the correct value. That's about the experiment. Anything you want to ask till here? Excuse me, ma'am.
Yes. मैम एक्चुअली इफ़ वी टेक 100 ऑसिलेशन वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि मैम अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस करते हैं तो 100 से पहले ही द पेंडुलम स्टॉप्स. तो आप कितना डिस्टेंस ले रहे हो? जितना डिस्टेंस देखो, आपको उसको 100 ऑसिलेशंस तो कराना ही है। तो यस अगर मैम. आप थोड़ा सा एंगल भी बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा नहीं, 10 डिग्री रख लो। कुछ इतना रख लो, चलो ये तो इससे ले जाके आई होप अगर आप इतना से करोगे तो हो जानी चाहिए आपके 100 ऑसिलेशंस। मैम ओके आई विल सी. मैम अगर नहीं हो पा रही तो मतलब 100 लेनी है, सो वी कैन इंक्रीज. हाँ, लिटिल बिट इंक्रीज इज अलाउड। ओके मैम. But you know why the condition of small angle is there? Because you see here in the theory part, it's all sine theta contribution, and sine theta will only take up the value theta for small angle. Yes If मैम. you increase the angle too much, then the approximation will not be valid. Here, Rupa? Yes मैम. मैम एंड वन मोर थिंग. हाँ. मैम इफ़ द मैम जैसे स्टार्टिंग में वी लाइक यू डिड द एक्सपेरिमेंट मैम, इनिशियली ही हमको डेल्टा टी ज़ीरो मिल गया, तो वी डोंट हैव टू डू इट फर्दर. No, you don't have to do further. You then start taking the time period for 100 oscillation at that particular distance only. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. Okay. मैम जो Anything? कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड है वो मैम Yes. दो डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे ना, जैसे 2.03 एंड 2.03 या हाँ तो 2.033 लेना पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, उसको राउंड ऑफ कर दो बाकी का वैल्यू को। ओके मैम. मैम फिर तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही वो क्लियर आएगा मैम. हाँ। या तो एक काम करो, यहाँ पर आप 2 का मत करो, आप 3 डेसिमल प्लेस तक ले लो। ठीक है, आप 3 डेसिमल प्लेस तक ले लो, क्योंकि यहाँ पर ना प्रिसीजन ज्यादा लेना पड़ेगा। आपका कैपिटल टी का डिफरेंस बिल्कुल 0 आना चाहिए। तो या फिर वो कुछ ऐसा आता है 0.001, तो भी ठीक है। 0.005 तक का जो वैल्यू होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि अगर 0.005 का स्क्वायर करोगे, देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला में आपको क्या करना है, it's t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर. सो द होल पर्पस इज टू मेक दिस फैक्टर स्मॉल. तो अगर आपका टाइम डिफरेंस जो है वो कुछ आ रहा है 0.005 आ रहा है, तो अगर उसको स्क्वायर करोगे तो 0.00025 हो जाएगा, विच इज मच स्मॉलर नंबर एंड कैन बी निग्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ठीक है बच्चे, आप सेकंड डेसिमल प्लेस पर उसको राउंड ऑफ मत करो, गो अप टू 3 डेसिमल प्लेस, राइट डाउन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच एज 0.001 seconds. फाइन ब्रजांशी? यस मैम. Okay. Any other question? So, ma'am, we take 3 observations and calculate their mean and use that value in this formula. Absolutely. You take 3 sets and then find the mean and then put the mean value of T1 and T2. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any other question? No? So girls, I will not continue with you on Fridays. So sir is there and I'm on leave. So college will arrange another teacher for you. And even if they don't arrange, it's fine. You can do your experiment and show the observations to sir. Okay? मैम ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है या इसके बाद भी कोई एक्सपेरिमेंट है? बच्चे एक एक्सपेरिमेंट आपका बच गया है, मैक्सवेल्स नीडल. Yes, Divya, you can pair the experiments and I'm sending you the, I'm on the, all of you have joined Google Classroom. Yes Yes, ma'am. So I will create the link there where you have to submit. So first you will submit the measurement wala experiment in which you used vernier calipers, screw gauge and all. ठीक है. Number 2 is your this flywheel. Number 3 is spring number 3 is simple pendulum error wala. Number 4 is bar pendulum. Number 5 is spring constant, है ना. तो अभी एक काम करो, अभी 20th हो गया ना, विद इन 4 to 5 डेज आप सबमिट कर दो 2 एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वर्नियर कैलिपर और दूसरा ये वाला
फ्लाईवील, इसका मैं लिंक जनरेट कर देती हूँ। तो 4 तारीख तक, 24 तारीख तक आप ये जमा कर दो। फिर अगले 4 दिन में आप एक तो कर देना बार पेंडुलम और एक कर देना सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और फिर अगले 4-5 दिन में 2 और, तो ऐसे ऐसे करके आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप टाइम टू टाइम सबमिट कर दो, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। मैम ओनली फेयर करना है ना, ऑक्सिलरी तो नहीं करना साथ में? क्या करना है बेटा? मैम फेयर प्रैक्टिकल का सबमिट करना है ना बस, पीडीएफ ऑक्सिलरी नोटबुक का तो नहीं करना? बेटा जो आपका फेयर फाइल होगा ना, उसमें भी आपको ये वाली चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना। देखो, जब आप फेयर Yes, फाइल, देखो मैं आपको एक फाइल ही दिखा देती हूँ, रुक जाओ। इस तरह से बनेगी आपकी फेयर फाइल। टू फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, आप लोग हैंड रिटन देना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, टाइप करके देना चाहते हो? मैम हैंड रिटन वी हैव डन। ठीक है, तो आप हैंड रिटन देना है तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है। मैम एक्चुअली वी हैड सबमिटेड द फर्स्ट वन टू रेशमा मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, देन इट्स फाइन। एंड फ्लाईवील आल्सो। हाँ हाँ, एम, apparatus, formula used, then observations, statistical method, diagram. This is the table for static method, then dynamic method, then diameter of the wire, diameter of the spring, graphs, and then calculations, and then finally the result. Okay, so that is how you have to do, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो ये इस तरह से, ठीक है। आप गूगल क्लासरूम पे मैं अभी लिंक जनरेट कर देती हूँ, वहां सबमिट करा देना, ओके। yes मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, सो आई स्टॉप हियर।